Okay, so today we start a very important thing, that is in the last day we see a moving coil galvanometer MCG. So see, this question is very important. That's why I want to show it first. The question is that a galvanometer needs 50 millivolt for full scale. So a galvanometer question, a galvanometer needs 50 millivolt for a full scale deflection. So my voltage of the galvanometer 50 millivolt, deflection of 50 division. So for this, suppose deflection 0 to 50, so number of total deflection, so 50 deflection. What do you mean by deflection? Each division is one deflection. Like this, you have total 50 deflection. You can take 0 to 1 as 0 to 10, 20, 30, like this, 50 deflections. Okay, find the voltage sensitivity. This is the first question. Find the voltage sensitivity. So what is the formula of voltage sensitivity? Deflection per unit voltage. Yes or no? Yes or no, everyone? Yes, sir. Yes, So sir. my deflection is 50 and voltage is 50 millivolt. So I can write it, or I can express it into form. One is this is the deflection. So 50-50 cancel. One deflection per millivolt. This is the one way I can express it. Another way I can express it. See, 10 to the power 3 means 10 to the power minus 3. What do you mean by that? Try to understand. Okay. One deflection by 10 to the power minus 3 volt. That means 10 to the power 3 deflection per volt. You understand what I want to say? Both are the same thing. One deflection per millivolt, yeah, 10 to the power 3 deflection per volt. You understand the pattern? Sometimes some students are confused. That's why I'm saying. Is it okay? Yes, sir. Now the question, so you find out the voltage sensitivity, that is one deflection per millivolt, yeah, 10 to the power 3 deflection per volt. They are the same thing. Find its voltage sensitivity. What must be its resistance if its current sensitivity is one division per microampere. One division means one deflection. Current sensitivity is one division, या one deflection. You can write division also. So चलो इसको division ही लिखते हैं. यहाँ पे division लिखा हुआ है ना, हाँ division ही है. So you can write it division, the better term. Division. So one division per microampere. See, what do you mean by one division per microampere? One division by 10 to the power minus 6 ampere. That means 10 to the power 6 division per ampere. You understand the pattern? Yes or no? Yes, sir. Okay, so we know voltage sensitivity is current sensitivity by resistance. So my resistance is current sensitivity by voltage sensitivity, that is 10 to the power 3 division per volt. Sorry, current sensitivity, I am sorry, current sensitivity is 10 to the power 6 division per ampere by 10 to the power 3 division per volt equals to 10 to the power 3 ohm. This is the one way you can express the question. You can express the question in another way also. You can express the question in another way also. That is,
Current sensitivity 50 division by 50 volt microvolt, and here 1 division for this much. So if you get 1 division for this much, so you can get it for the full division also, means for 50 division how much volt you have. Is it clear, everyone? Hello? Yes, sir. মানে আমি বলছি যে this much for the 50 division. Similarly, you have 1 division, this one. So you can find out the full deflection. What is the SI for the volt current for the full scale? You can. It's very simple. Mu ampere into 50. Then you can divide it and you get the same answer. Yes. V equals to IR. So you can get R is V by I. See, V is 50 milli, 10 to the power minus 3, and here you have 50 into micro, 10 to the power minus 6, তাই না? 50 কাটলো, দেখ এটা কাটবে 10 to the power minus 3, এটা উপরে যাবে 10 to the power 3 ওম। আসলো না সেম आंसर? হ্যাঁ, ঠিক আছে? Yes, sir. Yes, sir. I just want to show you in this way. This is one type of question. After that, see, my next very important thing is galvanometer. What is galvanometer? Galvanometer is actually MCG. Moving coil galvanometer is the galvanometer. But actually, what is the use of galvanometer? Galvanometer, if you see anywhere in galvanometer, the galvanometer is look like this. The outer screen, it's look like this. A needle you have, and you have a deflection scale like this. And here you have two terminals. Okay, either this one is move in the left side or this one is move in the right side. Okay, so that means basically we use this galvanometer only to check the deflection, means whether the current is there or not, whether the potential difference is there or not. Means when you check it, this one, so you can find out if the needle is deflect, that means some potential difference is there. If the needle is not deflect, that means no potential difference is there. Similarly, if this one, the needle is shows in this one, that means current is suppose clockwise. If it is showing this one, so that means the current is anti-clockwise. We just check these things, but neither, try to understand, neither we measure current nor we measure voltage by using the galvanometer. That means if this is the current in the galvanometer, this is the resistance of the galvanometer, the voltage of the galvanometer is current in the galvanometer and resistance of the galvanometer. So basically we can able to measure current, we can able to measure voltage, but neither we measure current nor we measure voltage by using the galvanometer. So in that situation, the most important question arises, why? Now, why we does not use galvanometer to measure current, or why we does not use galvanometer to measure voltage? Because we don't get the accurate value. Suppose for a system or for an instrument, suppose you expecting the voltage is 20 volt. Okay, so if you use a galvanometer instead of voltmeter, when you measure it, you find the voltage is instead of 20, maybe 10, maybe 5 volt. So your expectations is 20. You are measuring 5 volt. So is it a proper instrument? No, sir. No, sir. So that's why we neither measure current nor measure voltage by using the galvanometer. Why? Because it's current sensitivity or voltage sensitivity, or you can say it not properly measure, or it not give you the very near about or very true value of voltage or current. So what we do, why this galvanometer is very important, because the system is same, means actually this is a moving coil galvanometer. We can convert this moving coil galvanometer or galvanometer into ammeter. We can convert this galvanometer into voltmeter, and that is you have in practical exam also. So how you convert a galvanometer into voltmeter? So basically voltmeter is a galvanometer.
Voltmeter is a galvanometer with which we connect a very high resistance in series. High resistance. Once we connect a very high resistance in series with a galvanometer, now this galvanometer is not a galvanometer. Now the galvanometer is a voltmeter. You understand? तो ये जो तुम लोग जो वोल्ट मीटर देखते हो ये गैल्वेनोमीटर ही है, उसका आउटपुट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ रहता है. क्लियर? बॉक्स के अंदर. Is it okay? Yes, sir. So now this voltmeter is Ig, the current resistance of the galvanometer plus extra load resistance or high resistance. ठीक है? अब देखो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि why we need very high resistance. I just give you a very small example, then I think you understand that part very well कि why we need a very high resistance. Suppose I just give you a randomly a very small question. Suppose you have 10 ohm, you have 20 ohm, and if you connected it with a battery of 60 volt. So we know the current is 2 ampere. So what is the voltage of this one? Voltage of this one is 40 volt. Yes or no? Yes or no? This voltage. What is your expectation voltage? 40? Yes or no? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now suppose you connected here a voltmeter or galvanometer. Suppose galvanometer, the resistance is 20 ohm. The resistance is 20 ohm. So what is the equivalent resistance? What is the equivalent resistance? 20 কত হয়ে যাবে 10? Yes or no? Sir, yes. 10 plus 10 কত হয়ে যাবে 20? Yes, sir. So what is your current? 60 divided by 20, 3 ampere. So your current send is 3 ampere. This resistance is now equivalent resistance is 10. So what is your voltage? 3 into 10. How much? 30 volt. Yes or no? If you use a galvanometer. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And your expectations is how much? Sir, 20. 20. Your expectations is 40 volt. No, 40. Yes or no? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir, 40. Your expectations is 40. You are measuring 30. So 10 volt ka difference aaya. Yes or no? Now make it a voltmeter. How we make it a voltmeter? Very simple. Very simple. Correct a very high resistance. How much high you can want? Suppose I am connecting here at 2000 ohm. So what is the equivalent resistance? Anyone tell me what is the equivalent resistance? Calculator allowed, fast, tell me. Fast, tell me how much? Sir, 19.8. Sure. Yes, sir. Now what is your current? 60 by 19 plus 10, 29.8 ampere. What is your voltage you expect here now? 60 by 29.8 into 19.8. Anyone tell me what is the value? Sir, 39.8. So 39.8.
39.8 volt. Now you tell me, which one is more accurate, this one or this one? Sir, 39.8. So you understand why we use a very high resistance with the voltmeter, so that we get more accurate. Instead of 2000, if you use 20,000, it will be almost, instead of 2000, if you use almost 20,000, it will be 19.99 almost. So that is 39.99. So you get more accurate. Yes or no? Yes, sir. So when you make it infinity, that is called the ideal. Means you get exactly 20 volt, 40 volt. But ideal is not possible. Okay. Means generally it's very difficult to make infinity. So in general, you understand why we use a very high resistance. Clear? Yes, sir. Yes. Now Yes, if sir. examiner asks you why we use a very high resistance in in voltmeter, so you don't write this all questions and show them. You just simply say, as the resistance of the voltmeter is very high, so less current flow through the voltmeter. देखो high resistance का मतलब क्या है? कम करंट जाएगा और maximum current passes through the circuit, है ना? और maximum current मतलब क्या है? Your expectations is how much? 2 ampere, 3 ampere, कितना था? 2 ampere. Your expectations था यहाँ पे 2 ampere. तो यहाँ से 2 ampere current ही जाएगा कि नहीं बोलो? So when you connect क्या कहते हैं इसको, a very high resistance, maximum current flow through the circuit and very small current flow through the voltmeter, so it will measure more accurate voltage. Clear? Understand? Is it okay? Yes, sir. Yes, देखो sir. यहाँ पे जो 3 एम्पियर गया था पहले 20 था, तो यहाँ पे आके 1.5 आ गया था ना, 1.5 क्या 0.5 घट गया ना, सो 0.5 into 20, देखो कितना हो गया, 10 वोल्ट का डिफरेंस हो गया. समझ में आया मेरा बात? ओके एवरीवन? Okay, sir. Yes, sir. So that's why what happened ki, if they ask you question ki why we not use why the resistance of the voltmeter is very high, so that minimum current passes through the voltmeter and maximum current passes through the circuit, and we can get the more accurate reading. That's it. Clear? Okay. Okay, sir. Now the next part, that is ammeter. Okay. Now the ammeter. So how you convert a galvanometer into ammeter? How you convert a galvanometer into ammeter? So for that, you connect a very low resistance called shunt in parallel with the galvanometer. So then what happened? Your net current is increased. So that means my overall, it will be like now ammeter I. So if this is my I, from here you have IG. So the rest current flow through the shunt, less resistance, maximum current, I minus IG. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. So I just repeat this thing. That means when you convert a galvanometer into voltmeter, its voltage sensitivity increase. That means
it can measure more accurate voltage, or your scale become increased. Means if you use a galvanometer, if it measure some millivolt, if you convert it into voltmeter, you can measure, instead of milli, you can measure volt. Means it will be 1000 times increase the voltage. You understand what I want to say? স্যার Similarly, এটা আরেকবার বলো। মনে কর একটা গ্যালভানোমিটার আছে, আমি যদি এখান দিয়ে ভোল্টেজ মেজার করতে চাই, দেখা গেল হয়তো 1 ভোল্ট মেজার করছে। এবার when we convert this galvanometer into voltmeter, this 1 volt may be measure 100 volt, means 100 পর্যন্ত মেজার করতে পারবে, মানে সেন্সিটিভিটি ইনক্রিজ। আচ্ছা স্যার। মানে whenever you see in the question ki the galvanometer voltage is this much, now the voltage is that much and that voltage is higher, মানে যদি ভোল্টেজ বেড়ে যায় আর কারেন্টের ভ্যালু কমে যায় তার মানে ভোল্টমিটার। আর ঠিক তার উল্টোটা হয়, যদি দেখিস ভোল্টেজ কমে যাচ্ছে আর কারেন্ট বেড়ে যাচ্ছে তার মানে অ্যামিটার। অ্যামিটার। আচ্ছা। ठीक है, sometimes they say कि a ammeter measure that much current, a ammeter measure 1 milliampere current, what to do so that it will measure 10 ampere. So initial this ammeter is your galvanometer, use a very small resistance connected in parallel, you can make it 10 ampere. Are you getting my point? तो Yes, तो sir. इनिशियल जो एमीटर है वो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, इनिशियल जो वोल्टमीटर है वो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है। Are you getting my point? मतलब जो भी मेजर कर रहा है उससे अगर ज्यादा वोल्टेज मेजर करना है, so connect this with a very high resistance in series. जो भी मेजर करना है उसको अगर वोल्ट करंट बढ़ाना है, so connect a very small resistance in parallel. Clear? Okay? ओके सर। क्वेश्चन जब करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा ये सब वर्ड। Next part is see. Here it's very clear that this is a parallel connection, and as this is a parallel connection, I minus Ig into S, that is Ig Rg. So my S is Ig Rg by I minus Ig. So this is my shunt. We can measure the shunt from here. Okay. Okay, everyone. Yes, sir. Now see some numerical. Question number 1. The question is that a galvanometer of resistance 400 ohm. See how easy the questions are. A galvanometer of resistance 400 ohm can measure a current of 1 milliampere. Can measure a current of 1 milliampere. Okay. To convert it into a voltmeter, of 8 volt, find the required resistance. देखो ये एकदम simple question है, simple language का, कि ये साफ साफ बोल रहा है galvanometer को voltmeter में convert करना है, कितना resistance चाहिए. So you must mention whatever be the value you get connected in series. ये बात बोलना, हाँ, कि V is equals to Ig Rg plus RL. Yes or no? That is the formula only. Yes or no? यस सर। Yes, sir. So 8 10 to the power minus 3 400 plus RL, which means 400 plus RL. এটা এদিকে চলে যাবে, 8 into 1000, that is 8000. So RL is 8000 minus 400, 7600 ohm. কি হবে? Connected in series. সিরিজ কথাটা লিখবি, হ্যাঁ, কানেক্টেড ইন সিরিজ। ক্লিয়ার? মানে স্যার এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে, স্যার অ্যামিটারে স্যার ওটাকে প্যারালালে করতে লাগবে আর ভোল্টমিটারে স্যার হচ্ছে সিরিজে করতে লাগবে। হ্যাঁ, টু কনভার্ট আ গ্যালভানোমিটার ইনটু অ্যামিটার আর রেজিস্ট্যান্স কানেক্টেড ইন সিরিজ প্যারালাল। ঠিক है, to convert a galvanometer into voltmeter, to connect a resistance in series. Sometime examiner is very smart, they give you a voltmeter and they want to try to measure the
current. So same thing, voltmeter means galvanometer also measure the volt, তাই না? আরে বাবা, গ্যালভানোমিটার কারেন্টও মেজার করতে পারে, ভোল্টেজও মেজার করতে পারে। তো যেটা ভোল্টমিটার বলছে সেটা গ্যালভানোমিটারও তো হতে পারে না? Yes, sir. And if you connected a shunt, then this galvanometer converted into ammeter. Similarly, if you have an ammeter, you connected a high load resistance, you convert it into voltmeter. Voltmeter. Not only that, sometimes they ask you this, you have an ammeter and how much small resistance you connected so that it will measure that much ampere. So this ammeter is basically galvanometer. You understand? Yes, sir. And sometimes they give you a voltmeter and then it measure a very high voltage. So this volt is basically the galvanometer, voltmeter. Clear? So galvanometer, sometimes they say it ammeter, sometimes they say it voltmeter. And how you understand? पहले का वैल्यू मानो 1 वोल्ट मेजर कर रहा था, अब 10 वोल्ट मेजर कर रहा है, तो पहला जो 1 वोल्ट मेजर कर रहा था वो गैल्वेनोमीटर है, बाद में जो 10 वोल्ट मेजर किया वो वोल्टमीटर है. You understand what I want to say? Yes, sir. Yes, sir. So that is the way you can understand. See the next question, you understand. See, an ammeter read up to 2 ampere. देखो, ammeter read up to 2 ampere. ठीक है? Its internal resistance 0.9 ohm. Okay, increase the range up to 20 ampere. देखो, to increase the range up to 20 ampere. देखो, पहले वाला भी ammeter था, दूसरा वाला भी तो ammeter ही है. An ammeter read up to 2 ampere, its internal resistance is 0.9 ohm. To increase the range up to 20 ampere, find the required resistance. So पहला वाला जो ammeter था वो क्या है? Galvanometer. Sir, galvanometer. Understand what I want to say? सुनने में कैसा लगता है कि एमीटर को एमीटर कर रहा है तो क्या सर पागल जैसा बोल रहा है? मैं क्या पागल जैसा बोल रहा हूँ, समझ में आया ना? क्वेश्चन पढ़ के देखो, समझ में आ गया कि पहला वाला जो एमीटर था जिससे करंट का वैल्यू जो था उससे अगर करंट का वैल्यू ज्यादा हो गया तो पहला वाला एमीटर जो है वो गैल्वेनोमीटर है और दूसरा वाला जो एमीटर है अभी एमीटर है. तो मतलब यू कैन कन्वर्ट एमीटर इनटू एमीटर, यू कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी. You can convert the voltmeter into voltmeter, you can increase the sensitivity. Okay, you can convert microvolt become millivolt, millivolt become volt. You can do that also. That is also जो microvolt है वो मेरा galvanometer हम लोग सोचेंगे. Clear? Yes, sir. So now see, if we have a, so what is my formula? Very simple formula. Rg, this is the galvanometer Ig, and we use a very small resistance connected in series. Although you don't need to write this structure, I just show you. You just remember this one, I minus Ig into S, Ig Rg. Very simple formula. So S is what? Ig Rg by I minus Ig. So now put the value. Ig is 2, Rg is 0.9, I is 20 minus 2, that is 2 into 0.9 by 18. So you can write this 999 gaya, 0.1 ohm. Shunt resistance mane you connected where? Parallel. Okay. Okay, sir. Yes, sir. This is 0.1. So you understand that question? Now see the next question. Now see the next question. Next question. A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm. A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm. Okay. Shows full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. Shows a full scale deflection 2.5 milliampere. Okay, how will you convert the galvanometer into, number one, an ammeter range 0 to 75 ampere. So 0 to 75 ampere माने 0 to 75. हम लोग का ऐसा क्वेश्चन जब भी लेगा हमें मैक्सिमम वैल्यू को चेक करना है. ठीक है? Yes or no?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. And a voltmeter range 0 to 10 volt. हमेशा याद रखना फाइनल वैल्यू को चेक करना है. So see, इसमें I just want to show you one more thing which is very very important. Otherwise, sometimes students are confused and they kill their time. That is very very important. First, मुझे इसको galvanometer को ammeter बनाना है. So I minus Ig into S, that is Ig Rg. अब देखो S is Ig Rg by I minus Ig. ठीक है. Ig is how much? 2.5 10 to the power minus 3. Rg is how much? 12. और यहाँ पे देखो 7.5 minus 2.5 milli 10 to the power minus 3. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मैं एक बात तुम लोगों को बताना चाहता हूँ. तुम अगर इसको कैलकुलेट करने जाओगे मतलब तुम अपना मौत अपना पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो. समझा? डोंट ट्राई टू कैलकुलेट दिस. इसको लिख दो अप्रोक्सीमेटली 7.5, है ना? तुम कैलकुलेटर में करके देखो कितना आता है. करो 7.5 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. देखो आंसर कितना आता है. देखो कितना आता है. ट्राई दिस. सर 7.4. 7.5 माइनस 4 कहां से आएगा? না স্যার, ওটা আসবে স্যার অ্যাপ্রক্সিমেটলি 7.4. बैक. ये कितना आएगा? 0.2.5 0.025 यही होगा ना. 1 2 0.0025. ये सुन लो 1 2 3 इतना ही आएगा ना. Yes, तो sir. इसको अगर 7.5 से करेंगे तो क्या हो गया? 0.4 1 2 4 So 7.4975. So 7.4975 আসছে. इतना करने से अच्छा है. एंड देन द प्रॉब्लम इज इसको इसके साथ काटने में दिक्कत है. ये सुन लो. Yes, sir. तो इसीलिए क्या करना है, इसको मन ही मन इसको सेम रख. ठीक है. डोंट गो टू कैलकुलेट दिस ऑल पार्ट. आई जस्ट वांट टू शो यू कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा. सो जो बुद्धिमान है, एज दिस वन इज अ वेरी हाई डिफरेंस ना. देखो लास्ट वाला में क्या था? 10 और 2 या 20 and 2. वेरी स्मॉल डिफरेंस यू कैन इजीली कैलकुलेट. बट व्हेन यू गेट अ वेरी हाई डिफरेंस, don't go with all these things. Simply write this. तो क्या हो गया? 3, ये आ गया 4. एक नियरली साइन दे दो. 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओम. समझ में आया? अब ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 या 3.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एक ही बात है. समझा? Yes, sir. सो इसको यहाँ पे लिख के फिर कंफ्यूजन, फिर इसके साथ इसको काटने का कंफ्यूजन में जाना ही मत. जब देखेगा 1000 से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, 1 या 10,000 से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों के बीच में लगभग 1000 से ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है ना? तो जब ऐसा डिफरेंस आ रहा है तो उसको नियरली सेम कर दो. क्लियर? इट विल सेव योर टाइम. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? Yes, sir. Now the second part of the question, you make it voltmeter. So when you make it voltmeter 10 Ig 2.5 into 10 to the power minus 3 Ig 12 plus RL. So that is equals to, देखो ये इधर आ जाएगा तो 10 into this 10,000 divided by 2.5, that is equals to 12 plus RL. So ये इसके साथ आराम से चला जाएगा 4000. So RL is 4000 minus 12, that is 3988 ohm. No? Clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद देखो
One more question is there which is related to that. अच्छा मैं उसको बाद में करूंगा, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। আচ্ছা দেখ কোশ্চেনটা খুব সুন্দর। কোশ্চেন হচ্ছে a voltmeter of resistance 400 ohm, ঠিক আছে, একটা ভোল্টমিটার আছে, লাভলি কোশ্চেন। ভোল্টমিটার আছে যার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে 400 ohm, ওকে, is used to measure the potential difference, across 100 ohm resistor in the circuit. What will be the reading of the voltmeter? Number one, calculate the potential difference across 100 ohm when the 100 ohm resistor before the voltmeter is connected. I just want to change the pattern. मैं क्या पैटर्न चेंज करने वाला बोल रहा हूँ। This is your 100 ohm, this one is your 200 ohm, and this is your voltage is 84 volt. ये IIT का क्वेश्चन है, 82 ना 84 सॉरी, दारुण क्वेश्चन था, 84 वोल्ट, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में पहले बोला है कि यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाया है, सो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस 100 ओम, एंड विदाउट वोल्टमीटर व्हाट इज द रीडिंग। मैं ठीक उल्टा कर रहा हूँ, हाँ, मैं फर्स्ट विदाउट वोल्टमीटर आई एम ट्राई टू कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ दिस वन, एंड देन विद वोल्टमीटर क्या है बात एक ही है। सेकेंड वाला हम पहले करना चाह, इसमें बोला हम बाद में करेंगे, क्लियर? क्यों? इससे तुम्हें ना ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो लेट्स ट्राई विदाउट वोल्टमीटर व्हाट हैपेंड। Let I is the current. How you get the current? Very simple, 84 volt by 300 resistance. Yes or no? Yes, sir. So what is the voltage of the 100 ohm resistor? Current into resistance, that is 84 by 300 into 100. ये सबको पहले कभी मत कैलकुलेशन करना, क्योंकि पहले कैलकुलेट करने से टाइम वेस्ट होता है, बाद में देखो कितना इजीली कैलकुलेट हो जाता है। कितना आया 84 by 3? 84 by 3 कितना होता है? 28. Sir, 28. 28 वोल्ट। तो 28 वोल्ट इसका एक्चुअल होना चाहिए था, है ना। नाउ आई एम कनेक्टिंग हियर वोल्टमीटर, and the resistance of the voltmeter is how much? 400 ohm. 400 ohm. Clear everyone? So now it is very clear that they are parallel. So what is the equivalent resistance? 400 into 100 by 400 plus 100. So this is 400, 100 by 500, 5 8 40 মানে 80 না? Yes, Yes or no? 50 ohm. So what is the total? R total 80 plus 200, that is 280 ohm. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So what is my current now? 84 by 280. What is the answer? Whatever, I don't need to calculate this now. मैं ही बोला, मैं ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर वोल्टेज ऑफ 100 नाउ देखो, मेरा इसका इक्विवेलेंट, इसका पूरा का इक्विवेलेंट वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना है? इतना ना? Yes, sir. So 84 by 280 into 80. Let's calculate now. 0 0 8 का 4, ये होगा 14, ये गया 2, ये गया 7. Is 84 is divisible by 7? Yes, sir. कितना? 12. Very good. 12 7. So it's not a very tough question. 24 volt. You realize, now you realize, हम लोग को लगता क्या है, हम लोग वोल्ट मीटर लेते हैं तो जो मेजरमेंट वोल्टेज है वही मेजर करेगा। सो ये 28 वोल्ट है, ऑप्शन में रहेगा
हाउ मच द वोल्टमीटर मेजर द वोल्टेज, ज्यादातर बच्चा 28 करके आ जाएगा, नहीं। You understand? Now the voltmeter after connecting the voltmeter measure करेगा 20 वोल्ट, क्यों? क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है अभी 80 हो गया है, क्लियर? यस सर। बट यही Yes, sir. 400 को अगर हम 4000 कर देता, so maybe it will be very near to 28, 27 point something like this, clear? Yes, sir. यस सर। So you understand कि why we use high voltage, high resistance. अगर रेजिस्टेंस के साथ इस वोल्टमीटर का ज्यादा डिफरेंस ना हो तो वैल्यू कम आएगा, ठीक है? और इफ इट इज आइडियल मतलब इंफिनिटी, तब जाके एग्जैक्ट 28 आएगा, ठीक है? तो देखना वर्ड क्या बोल रहा है, इफ यू यूज अ आइडियल वोल्टमीटर तब जाके इसका अगर बोलेगा व्हाट इज द वोल्टेज, इफ यू मेजर इट बाय द आइडियल वोल्टमीटर देन इट विल बी 28. बट इफ दे गिव यू द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर, मतलब चक्कर है, पहले पैरेलल निकालो फिर कैलकुलेट करके आंसर बोलो, ऐसा नहीं कि हवा में बोल दो, क्लियर? Yes, sir. ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन है, देन आई कैन से दैट पार्ट इज कंप्लीट एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट एम्पियर सर्किटल लॉ. एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बाकी है. द क्वेश्चन इज a galvanometer with a scale division of 100 equal divisions. बड़ा सुंदर क्वेश्चन है. 100 इक्वल डिवीजन है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है? A galvanometer with a scale divided into 100 equal division has a current sensitivity. देखो कितना सुंदर क्वेश्चन. Current sensitivity 10 division per milliampere. लास्ट बार का जो क्वेश्चन था 1 डिवीजन पर मिली एम्पियर में था, पर मिली माइक्रो एम्पियर में था. एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी था 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, ठीक है? व्हाट एडॉप्शंस आर रिक्वायर्ड टू रीड, नंबर 1, व्हाट एडॉप्शंस आर रिक्वायर्ड टू रीड नंबर 1 5 एम्पियर फुल स्केल for full scale. देखो टोटल 100 डिवीजन है, करंट सेंसिटिविटी क्या है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो 100 डिवीजन में कितना होगा 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम होगा कि नहीं बोलो? यस सर। और इसको कितना करना है 5 एम्पियर, तो क्या करना है यू नो क्या करना है? a very small resistance connected in series parallel, what adoption required? That adoption required, yes or no? Yes, sir. And the second one, see, ये भी क्वेश्चन आईआईटी में पूछा था कि 1 डिवीजन पर वोल्ट, 1 डिवीजन पर वोल्ट करना है, क्या एडॉप्शन करना है? सबसे पहले ये एडॉप्शन तो बात का बात है, पहले यहां से देखो, हमने जो तुमको उस समय दिखाया कि करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी से हमें रिवर्स चीज भी मिलता है, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर. सो 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर होता है. 1 डिवीजन में क्या हो गया 1/10. 100 डिविजन्स में कितना हो गया 1/10 into 100, that means 10 milliampere. So I can say my current due to the galvanometer is 10 milliampere. Can we say that? Yes, sir. Similarly, see 2 division for 1 millivolt, 1 division 1/2 millivolt, 100 division 1/2 into 100, that is 50 millivolt. Can we say? देखो आगे वाला करंट सेंसिटिविटी का ठीक उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं पूछा है वैसे करके, दूसरा चीज पूछा है. बट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस करंट एंड voltage of the galvanometer full scale, yes or no? Yes, Yes or no? Once you get this one, VG is IG RG. Can we write this? yes sir. So my RG is how much? VG by IG. So VG is 50 millivolt, IG is 10 milliampere, that is 5. So after I complete all this, now I am trying to
convert it into 5 milliampere. How we convert this? I minus Ig into S, that is Ig Rg. So S is Ig. What do you mean by Ig? Ig is 10 milliampere. What do you mean by 10 milli? 10 into 10 to the power minus 3. That means 10 to the power minus 3. That means 0.01. Yes or no? So 0.01 into 5 divided by 5 minus 0.01. Yes or no? Yes, sir. So that is 0.05 by 4.99, which is 5 by 499. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Even if you write in shortcut key, that is 0.01 into 5 by 5, that is 1 by 500. Sorry, 5 cancel, 1 by 100. They are almost same thing. 5 by 499 বা 1 by 100 একই बात है कि नहीं? স্যার ওই 4.99 কে 5 নিতে পারি না অ্যাপ্রক্সিমেটলি। সেটাই তো বলছি, 5 by 4.99 কর না, এটার অ্যান্সার কত আসবে? 0.01 ই অ্যাপ্রক্স আসবে। তো এইটা লেখ, এইটা দেখ, খুব 0.11টা খুব ইজি ক্যালকুলেট, তো অনেকে এইখানে লিখে দেয়। বাট আমি যদি এটাকে দিস বাই দিস করে এটাও অ্যান্সার করি, এক্সামিনার কাটবে না, বলবে ঠিকই আছে। তুই ক্যালকুলেটর করে দেখ 5 by 499 কত আসছে। 5 by 499 কর, দেখ কত আসছে। 0.01 কি আসছে? হ্যাঁ স্যার 0.010 তারপর অনেক কিছু তো আসছে। 0.010 দরকার নেই, আমি 0.01 রাখলে রাইট, তাই না? হ্যাঁ স্যার। তো এই জন্য বললাম যে যখন এরকম ডিফারেন্স থাকবে, যদি দেখ এখানে যেমন আমি আই ক্যান ইজিলি ক্যালকুলেট দিস, সো আই ক্যান, বাট যেখানে আমার একটু কনফিউশন হবে, পাতি এটাকে 5 নিয়ে নেব, মানে এটা হচ্ছে সিধা 0.05 by 5, তার মানে 1 by 100। এখানে এটা এরকম গোল্লা মেরে দেবো অ্যাপ্রক্স, কাউরের কিছু বলার নেই, ঠিক আছে? Yes, sir. Yes, sir. Now see the next part of the question. আমার একটু জায়গা লাগবে, সো আমি এই জায়গাটা একটু নিয়ে নিলাম। Second part of the question, 1 division per volt. So 1 division per volt মানে আমার কত ভোল্ট লাগবে? 100 ভোল্ট। Yes or no? 100 ডিভিশন ছিল। Yes or no? Yes, sir. So 100 volt is equals to Ig. Ig কত আছে? 10 to the power minus 2. Rg কত? 5 plus RL, তাহলে কত হয়ে গেল? 5 plus RL, এটা হয়ে গেল 100 into 100 10,000। সো RL কত হয়ে যাচ্ছে? 9,995 ওহম। Yes or no? হ্যাঁ স্যার। So that's it for today. Okay,